I will give a brief introduction of our speaker, Ms. Disha Patil. She's a data scientist working from last 4 years, and her education is in applied mathematics. And right now, she's working with Ernst & Young company as a senior data scientist in the domain of finance. Okay. So, as a part of learning GitHub, this is our second session. So, I hand it over to Disha now. Disha. Hello, hi. Thank you, Ajay. And welcome everyone for the second session. My video is on. So welcome everyone. So we already have gone through some basics of GitHub and understanding the logic of using GitHub in first place, right? I was thinking maybe we should start right from the point, last lecture's point, revising some of these stuffs, going through any questions that you might be having. So anybody from the students, do you have any questions that we can start today's lecture with? Because before we jump into the other part of remaining commands, I think it would be a good idea to go through these questions. Anyone? Otherwise, I will start asking questions then. Okay, so let me start asking. I'll have the questions in the chat window as well, and you can answer it. Maybe you can unmute. I see there are only 16 participants today, so you can unmute and answer, or you can paste your answer in the chat window as well. So is Git, or let's say GitHub, is GitHub a analytical software or platform? Yes or no? Answers in yes or no, please. Anyone wants to take a plunge? Okay, Ritik is saying yes. Anybody else? If you have problem, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एनालिटिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है आप पूछ सकते हैं मुझसे. सो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर बन गया जैसे sorry for that disturbance in between. I was looking at some. Anyone? Sneha is saying yes, is an analytical software or platform. अगर किसी को दिक्कत है कि एनालिटिकल सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझे. Okay, so let me ask you something else. दो आंसर्स आए सिर्फ 16 पार्टिसिपेंट्स में से. Is R software? Is R analytical software? आपने R पढ़ा है? R स्टूडियो आईडी यूज करके आपने R के कुछ कोडिंग्स वगैरह किए हैं, तो R एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है क्या? Okay, Minto is saying yes. Okay. Ritu is saying I did not attend your first session. Okay, no worries. We're going to do some revision in the first part of this lecture and then jump into the remaining parts. So you would be able to catch up. So the thing is, we need to understand what is an analytical. When I say analytical software, एकदम मतलब hard and fast term नहीं है.
व्हेन आई से एनालिटिकल सॉफ्टवेयर, मेरा कहना यह है कि इसके साथ आप कुछ डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो क्या इस सॉफ्टवेयर के साथ। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप कुछ कर सकते हो क्या। Ritik is also saying R can be used for analytical in as an analytical software. So R एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। गिटहब ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही वो कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा डाल दो और आपको कुछ एनालिसिस मिल जाए। गिटहब ये कुछ भी नहीं है। गिटहब में आप क्या कर सकते हो, यस, गिटहब में it's a platform to host your code, okay, and not just the code, different versions of your code, okay. इसमें अभी और एक डिफरेंशिएशन है जो कि डू आई हैव समथिंग, जो कि हमने लास्ट टाइम टच किया था कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Git and GitHub? Ritik is saying it's a platform. Yes, it's a platform, online platform है जहाँ पे हम कोड होस्ट कर सकते हैं. Admin is telling me GitHub is a remote repository. Yes. So हम remotely क्लाउड पे अपना कोड होस्ट कर सकते हैं. और गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसके हेल्प से आप अपने कोड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हो. जैसे कि एडमिन इज राइट नाउ टाइपिंग इन गेट इक्वल टू लोकल रिपोजिटरी. आपके खुद के कंप्यूटर में अगर आपको आपका कोड ढंग से रखना है, मतलब मैंने 1 जुलाई को एक पीस लिखा तो एक वर्जन हो गया, मैंने सेव कर लिया. फिर मैंने 10 जुलाई को वापस आके उसमें कुछ चेंजेस किए और एक वर्जन बन गया. तो 12 जुलाई को मैं उठ के देखा तो मेरा कोड चल नहीं रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया लास्ट चेंज के बाद. सो गिट की वजह से, बिकॉज मैंने एक वर्जन 1 तारीख को सेव किया था, दूसरा वर्जन 10 तारीख को सेव किया था, मैं पिछले वाले वर्जन पे जा सकता हूँ. ओके, दिस कैपेबिलिटी, दिस एबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें गिट इज वन ऑफ द वर्जन कंट्रोल सिस्टम. और हम अभी गिट ही पढ़ रहे हैं. मोस्टली सारे लोग सॉफ्टवेयर में गिट यूज करते हैं ज्यादा करके, और ये आपके लैपटॉप में रहता है. सो अगर आपको यही आपके कोड्स वगैरह किसी के साथ शेयर करने हो तो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसे होस्ट करना है, एक रिमोट रिपोजिटरी में, जो कि आपका गिटहब का प्लेटफॉर्म हो गया. सो आपने जो भी काम अपने खुद के लैपटॉप पे, खुद के मशीन पे किया है, आप उसे गिटहब पे होस्ट कर सकते हो. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है गिट में और गिटहब में. ओके, सो गिटहब इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म टू होस्ट योर कोड ऑनलाइन. Okay. Then we went into, yeah, why to use GitHub basically. अभी तो मैंने आपको एक hint अभी बता दिया, but is there anything else, and you can even repeat this, why to use Git or GitHub? You can say why to use Git and GitHub as well, but any answers for this? क्यों यूज करना चाहिए गिट? मैंने आर स्टूडियो में कोड लिख दिया मेरा, सो काम हो गया. सो गिट की क्या जरूरत है? वन आंसर वी हैव गॉट यूज फॉर डिप्लॉयमेंट. यस, अब जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिए, अब जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो यू डू यूज गिटहब टू deploy your code into production and all, and to maintain, basically to maintain the entire code base. And it's also these are some advanced concepts, so I don't want to jump into that. To save our software, yes, Manish is saying to save our software. We will break down the word software into to save our code, to save our files. You can even say it's not necessary कि आपके पास .r की ही फाइल होनी चाहिए, आपके पास .py की फाइल होनी चाहिए, आपके पास .html ही होनी चाहिए. It can be as simple as a text file also.
ओके एक साधारण टेक्स्ट फाइल भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो वहां पे। इतने बेसिक लेवल पे अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर जाता है। ठीक है, सो इट्स अबाउट एनी काइंड ऑफ फाइल, but mostly we are trying to use it for maintaining different versions of a code file. Okay, software becomes a very big concept जहाँ पे बहुत सारे elements एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। बट बेसिक आपने कुछ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सपोज आपने कर लिया, ओके या फिर आपको कोई आप स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कर रहे हो, आपको एक पहली असाइनमेंट दी कि ये 10 क्वेश्चंस आर में सॉल्व करने हैं या पाइथन में सॉल्व करने हैं, आप वो अपलोड कर सकते हैं वहां पे गिटहब पे। फिर आपको अनदर 10 क्वेश्चन अगले क्लास में टिचर से मिले तो आप वापस वही फाइल में अगले 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐड कर सकते हो और फिर से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दो वर्जन आपके गिटहब इज मेंटेनिंग टू डिफरेंट वर्जन ऑफ योर फाइल्स to save our work on GitHub. Yes, Neha, to save our work on GitHub, whatever you want to work on your local machine, you can save it on GitHub also. तो GitHub पे अगर आपने सेव कर लिया तो you can share it with your friends also. The example आई, if you save your assignments to GitHub, आप directly वो link आपके teacher को भेज सकते हो कि this is my submission, would you please check. Uh, There's another one, Manish. Code file means any kind of a file that .r file is basically where your R code is living into. .py file is like wherever your Python code is written. Whatever file where your Python code is written. ठीक है, आपने पाइथन का कोई भी काम किया तो आप वो फाइल में सेव करते हो ना, या फिर आपने सी लैंग्वेज में कोडिंग किया तो वो फाइल सेव करते हो, दैट फाइल रन्स एंड एग्जीक्यूट्स योर कोड. So that's what I'm meaning by my terminology here. Okay, so yeah, so we are like sort of on but nobody here is mentioning that we are using basic use of GitHub is to manage and maintain different versions of a file. आपने आज सुबह उठ के एक काम किया, कंट्रोल सेव किया, दोपहर को उठ के वापस काम किया, कंट्रोल सेव किया, तो पिछला काम भूल गया कंप्यूटर. यू कैन नॉट गो बैक टू दैट प्रीवियस वर्जन. लेकिन आपने अगर गिट एड एंड गिट कमिट जो हमने कमांड्स देखे थे वैसे करके सेव किया तो गिट विल रिकॉर्ड कि ओ ये वर्जन सेव हुआ था आज सुबह. फिर दोपहर को मैंने कुछ अलग वर्जन सेव किया, फिर मुझे शाम को पता चला कि मेरा दोपहर का वर्जन एक्चुअली बकवास है, वो वर्क नहीं हो रहा है, तो मैं वो डिस्कार्ड करके प्रीवियस सुबह वाले वर्जन पे जा सकता हूँ. दिस ability is provided by Git and nothing else. Okay, so the basic objective of using Git is version controlling. different versions एक ही काम के सेव करना. Okay, and then yeah, यहाँ तक clear है? Anybody has any questions over here? No, please. Any questions? I'm sorry, somebody has written hash code in the chat box. Can you explain on that? I'm not able to understand. So, okay, so this is the basic objective why we are learning Git, why you should be using Git when you're doing serious kind of a coding activity. Then we saw the GitHub website and we saw what do you call a repository. And now we'll go directly on the website and start interacting there itself. Version of a Git code. Okay, version of, yes. So Git, when you're saving your Git, the Git gives an identity to your version, और उस identity के by calling that identity number, basically you can go back and forth between your versions. That is correct.
collab only runs .py file. Minto is saying collab only runs .py file. Collab works like a Jupyter notebook, but I don't remember if I have used R code on collab ever. Uh, yeah, I have never used R code on collab ever. Let me get back to this. Uh, it basically has only it is a notebook environment basically. So does it have a kernel option to drop down? I'll check and get back to you, Minto. This is something else. uh okay, so what I was doing is I was opening the GitHub website and then we can walk through it right away. Sharing my screen. Okay, so there was one assignment given to you. Has anybody completed it? Are you able to see the screen? Are you able to see the GitHub page on my screen? Yes, yes. So last time I had given a assignment to you, that you need to go on GitHub and create your account. Has anybody tried to do that? Were you able to access github.com, create an account? Anyone? Yes, yes, I have created. One person, Sagar Bauri, already has it. Somebody who did not have it and has created again, newly, not again. Okay, I strongly urge you to create an account, even if you're not using Git, even if you're not using GitHub, just create an account. आप Facebook पे जाके जैसे अकाउंट बना लेते हो ना, एक सोशल मीडिया वेबसाइट मिल गया तो अकाउंट बना दिया, पहले बना दीजिए GitHub पे अकाउंट. जब तक आप अकाउंट नहीं बनाएंगे, पब्लिक रिपोजिटरी मतलब दूसरे लोगों की रिपोजिटरी जिन्होंने वो ओपन रखी है, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके फायदे क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका यूजफुलनेस क्या है. पृथ्वी हैज ऑलरेडी मेड इट गुड. सो दिस इज दी गिटहब अकाउंट. अभी recent repositories लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहे हैं. आई जस्ट increase the size so it's a bit more visible for some of you. So left side, you can see this is like list of my recent repositories. Okay. New repository last time हमने बनाया था. We will have a walkthrough from it, how to make a new repository. GitHub workshop का यही बनाया था शायद. Yes, 14 days ago. So I went to one of a particular repository from the list. अगर मुझे सारे repository वापस देखने तो मैं I can go to my home page, which is here. This gives an overview कि मेरे mostly use किए हुए repositories कौन से हैं. Repository मतलब project, okay? कोई project जिस पर मैं काम किया है. It's like a folder structure. You can imagine. So repository section has this entire list. अभी तक कितने मैंने repositories बनाई है. Okay, and then I can go into any of these repositories and look at my work. Project is something like projects and packages we will not go at this point. We will keep it to repositories for now. There is stars, something you can use, start using as a beginner. So stars is something जो मेरी रिपोजिटरी नहीं है. ओके, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी ग्राफिस्ट्री अकाउंट होल्डर है, उनका काम है, उनकी रिपोजिटरी है पाई ग्राफिस्ट्री. सो मुझे ये काम अच्छा लगा, मुझे कभी फ्यूचर में जाकर इसे रेफर करना है तो मुझे बुकमार्क आप कैसे यूज करते हैं, ब्राउजर में आप बुकमार्क यूज करते हैं ना. सो स्टार इज लाइक अ बुकमार्क. ओके, लीना फैक्ट करके एक अकाउंट है, उनका कुछ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क पे वर्क है, तो मुझे अच्छा लगा, दिस इज अ गुड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो मैंने बुकमार्क कर लिया. सो anytime I want to use this or refer to this in future, मैं मेरे स्टार रिपोजिटरी में जाके चेक कर सकती हूँ. Okay, so once you have your account, you would be able to go through the public repositories, bookmark some of them, go through their codes and stuff. Many of you I hear are also from or
or trying to go into academic as a research assistant or further studies. So you have to uh, if you are writing any experimental paper, you need to release some code with that paper. तो आप वो कोड भी GitHub पे होस्ट करके you can attach this GitHub link directly to your final paper. So this is one of the paper that I had contributed to, और इसका सब code maintenance इस repository में है मेरे. The readme file is like a very clear document जो नए इंसान को बताता है कि इस कोड के साथ करना क्या है, ये आपने स्ट्रक्चर कैसे किया है, कौन से कोड में क्या फाइल है, how do you want a new person to run this code and stuff. ओके, सो रीडमी का बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है. कोई भी रिपोजिटरी आप बनाओगे, रीडमी डॉक्यूमेंट शुड टेल कि इस रिपोजिटरी में क्या है एंड हाउ डू यू इंटेंड कि सामने वाला पर्सन ये यूज करे. रोहित कुमार इज आस्किंग व्हाट इज कोडिंग. So, Rohit Kumar, have you done any lecture on R programming or Python programming before at Nalanda? It's basically it's basically uh, writing and what do I say? Uh, a computational or logical steps that will be followed every single time exactly, so that you get automated work done. Okay. uh, Minto is giving you the answer that it is programming, which is like sometimes it goes hand in hand. The words actually sound like synonym, uh, programming and coding. सो बेसिकली कोडिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज ऑटोमेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, ये जो आप रिपोजिटरी देख रहे हो ग्लेशियर मॉडल्स के लिए, सो वी वर स्टडिंग द बायस इन स्केलिंग बेस्ड ग्लेशियर एस्टिमेट्स. एकदम शॉर्ट में अगर बताना है तो देयर वाज अ फॉर्मूला विच वाज अ स्केलिंग लॉ. एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके यूज के साथ साइंटिस्ट आर लुकिंग एट कि कितना ग्लेशियर का आइस लॉस होता है. Okay, now if you did not have like coding and automatic computing kind of a stuff, आप बैठ के हर एक नंबर उस फॉर्मूला में डाल के उसका आंसर निकालते हैं, राइट? और ऐसे करते करते मतलब यू विल नेवर कंप्लीट दैट वर्क. इट्स अ वेरी मैनुअल एंड वेरी बिग वर्क. ये काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता अगर कंप्यूटर नहीं होता. सो व्हाट डज कंप्यूटर डू? मुझे ये फॉर्मूला में ऑटोमेटिक मेरा इनपुट डाल के गिव्स मी आंसर्स, तो मैं आंसर्स एनालाइज कर सकती हूँ. और एनालिसिस के लिए भी आई राइट अ कोड. सो एनीथिंग दैट इज लाइक ऑटोमेटिंग माय एनालिटिकल जॉब बेसिकली. ओके. Yeah, so where were we? This is a repository. Inside repository, last time हमने सिर्फ readme file बनाया था, जो हमने नया repository एक बनाया. Then we git pull use करके हमने वो local पे pull किया, copy बनाई. Okay, we started making repository on the GitHub platform. Okay, एक नया repository बनाया, so हमें एक नया name मिला यहाँ पे. Then we git pull करके मतलब we pulled whatever is the remote repository, उसको pull करके local machine में उसका copy बनाया. फिर local machine में हमने editing किया, right? फिर git save करने के लिए क्या है git में? What are the steps to save in git? पहले आपको add करना पड़ता है. Okay, let's give me a second. Let me see if I have that slide ready. Okay. So पहले आपको ऐड करना पड़ता है गिट के ट्री में. देन यू हैव टू कमिट कि ये ऐड हो गया है. नाउ आई वांट टू कमिट कि ओके यही वर्जन जो है ये कमिट कर दीजिए, तो वो प्रॉपरली सेव हो जाता है. एंड देन यू पुश. सो पुश करने के बाद इट गोज टू योर रिमोट रिपोजिटरी अगेन. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल फाइंड दैट स्लाइड. Okay, where did it go?
Yes. Hmm, found it. Sharing the screen again. Can you see this? Yeah. Can you see this now? Yes, I can see it. Okay. Where did? Oh no, not this one. Sorry. I've pulled up so many resources for you guys that it's a bit confusing. Yep. Yeah. Okay, you can see this diagram. Yeah. So हमने एक रिपोजिटरी स्टार्ट करी गिटहब में प्लेटफॉर्म पे. How did we start it? By clicking on that new repository button. Let us follow that itself over here. Where is my GitHub? Okay. So if I go to my home page, okay, repositories tab, there is a new button over here. Okay, if I click on this new button, I have to give a new unique name to the repository. तो वो unique name की repository बन जाएगी, which we did last time. Then we made a copy of that repository by doing a git clone. Okay, and तो वो first time when you do it git clone. Okay, first time जहाँ पे आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, you don't have any of that repository data on your computer, you do git clone on your machine, right? Then you come over here. Now you're editing the files inside it. So last time we had the readme file where we made small changes, तो हमारी file change हो गई. We saved that file, but merely saving does not add it to your git tree. So you have to do a git add. So git add जब आप करोगे तब git को पता चलता है कि ओके फाइल में कुछ चेंजेस हुआ है. तब तक git को पता नहीं चलता है कि फाइल में कोई चेंजेस हुआ है जब तक आप git add नहीं करते हो. और हमने ये star we had used, git add the star symbol we had used. If you स्टार सिंबल क्या करता है कि आपके पास अगर 10 फाइल हो तो सारी की सारी 10 फाइल वो ऐड कर देता है. सो सारी की सारी 10 फाइल वो गेट को बोलता है लुक इनटू ऑल 10 फाइल्स एंड सी द चेंजेस. अगर आपको गिट में सारी 10 फाइल्स के चेंजेस नहीं ऐड करने हैं तो उसको आप सिंगल फाइल के नाम भी दे सकते हो. सो यू कैन गिव ओनली वन फाइल नेम, ओनली टू फाइल नेम्स. जो भी आपको फाइल्स ऐड करनी है गिट में बस उसी फाइल के नाम आप दे सकते हो. सो वो गिट ऐड हो गया. सो ये जब गिट ऐड हो जाता है ना तो इसको बोलता है स्टेजिंग एरिया. स्टेजिंग एरिया मतलब दिस इज दी, अगर यहाँ पे फाइल्स आ गई तो समझ लेना कि गिट को पता चल गया है कि कुछ चेंजेस हुए हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो गिट को पता चल गया कि कोई चेंजेस हो गए. देन यू बेसिकली डू अ गिट कमिट. तो वो चेंजेस फाइनल हो जाता है. एंड गिट कमिट ऑलवेज comes with this -m flag. So git commit -m flag मतलब मैसेज होता है. So हर एक commit के साथ आपको एक मैसेज टाइप करना पड़ता है this inverted commas में. Okay, and this message should be short but meaningful कि अभी आपने क्या changes किया. So whenever you're going through your history you will get to know कि किस टाइम पे क्या चेंजेस किया था तो कौन सा वर्जन बना था. देन व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो बैक टू सम प्रीवियस वर्जन दिस कमिट मैसेजेस विल हेल्प यू. Okay, so this is the whole flow. Now you tell me, once I do commit, does my work automatically reflect on the remote repository? Okay, remote repository मतलब क्या? GitHub. एंड लोकल रिपोजिटरी मतलब आपका मशीन. सो मैंने गिट कमिट कर लिया. सो मेरा ये लोकल रिपोजिटरी में चेंजेस सेव हो गए. ओके, नाउ यू टेल मी, इज विल इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन गिटहब और नॉट?
will git commit help to reflect changes on GitHub? Yes or no? Sagar is saying push command is needed. That is absolutely correct. Once you commit, आपके लोकल में तो चेंजेस दर्ज हो गए हैं, लेकिन उसको अगर आपको गिटहब में दिखाना है तो आपको गिट पुश करना पड़ेगा, मतलब लोकल मशीन का डेटा वापस रिपोजिटरी पे पुश करना है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस infographic here. Okay, then you can see it in your GitHub repository as well. Okay, now the cycle gets completed. Now there is another scenario over here. Suppose uh, there is this GitHub repository, like abhi to मैं single person I was working on it, right? If this also I think we saw last time. If I am working on this GitHub repository, अभी मैंने push कर दिया, जो भी local changes था मैंने push कर दिया. Suppose somebody else um, clones this repository on their local machine and then makes changes, then does a git add which will bring the changes to staging area, मतलब git को पता चल गया कि कोई file में change है, and then does a git commit. तो git repository में, मतलब local repository में वो changes दर्ज हो गए, लेकिन ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ये किसी और ने किया है, तो cloning part anything somebody else has done but for the same repository, क्योंकि उनको मैंने एक्सेस राइट दे के रखा है, एंड देन दे डू गिट पुश, तो उनके भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए गिटहब में. नाउ द नेक्स्ट टाइम आई वांट टू वर्क ऑन दिस रिपोजिटरी, I will have to first do a git pull. Okay, so git pull is a command that helps me to get most recent copy from the remote repository on my local. Okay, so always your whenever you start working on your git repository on your local machine, always start with git pull. That ensures कि remote पे कोई changes ऐसे छूट नहीं गए जो आपके local में नहीं है. This is very important when you're working with your collaborators. अब अकेले की repository पे हो तो there's no chance कि कोई और आके उस पे काम कर रहा है, लेकिन अगर आप collaborators के साथ काम कर रहे हो, always and always and always git pull first. Okay, and then do your changes. Admin is telling git pull. I guess this is the command. Yes, that is correct. I am very intentionally not taking on the VS Code and terminal at this point, because I am trying to make you all comfortable with the GitHub platform more and the concepts of using Git more, because I know many of you do not have computers to take it as a uh, uh, like a work along kind of a course. Is that okay, Ajay ji? Do you think it's fine? Because I really want the people to get comfortable with the concepts, and there are some forking and kind of things which I can show on GitHub itself over here. Yes, yes, I think that will be okay, so that they get more familiarity with the GitHub, where to click, what to do, with that. Yes. I really don't want to scare them with the terminal. We will. I think I should really suggest that we should do a uh, like a workshop where we are actually doing it with the students. Yeah. तो फिर वहाँ पे फिर हम terminal पे जाएंगे. Yes. Okay. So this is the whole flow. Now last time we did some changes, right? So what changes यहाँ पे you can always look into this wala. So somebody was telling na, every time a version is recorded, this is what the ID is associated with that particular version. And over here you can see that in past, for this repository, in past there are 3 commits that have been registered. If I click on this commits, I can see this commit tree. So this was the first commit which happened when we created the repository from scratch. When we clicked on the new repository button, this was the first commit that got registered.
Okay, every commit has a unique identifier over here. Then we did a second commit. We did a we pulled it on the local repository, made a commit, and again pushed. So that was the first commit. We can go and view the commit details. So we are inside add first commit. So पहले ये readme में सिर्फ test repo था, and this plus plus green sign, green color में जो plus plus है, it is showing क्योंकि ये नया line add हो गया था. Okay, what was the change from previous to this file was that these two lines got added. That was the only change. If I go back and I go to this commit, then it is showing me one red line and two green lines, meaning from the previous file, this line got deleted and another two lines were then added. Okay, so this is called a diff file. Okay, diff is a short for difference. मतलब आप कोई भी दो फाइल उठा लो तो ये फाइल में और ये फाइल में लाइन बाय लाइन वो कंपेयर करता है और लाइन बाय लाइन वो रजिस्टर करता है कि क्या डिफरेंस है. ओके, फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट लाइन सेम, अगर सेम है तो इट विल कीप इट एज इट इज. सेकेंड लाइन सेम है, प्रीवियस में भी ब्लैंक था, ये में भी ब्लैंक है, सेम है. द थर्ड लाइन then it checks, oh no, this is this ये previous में था लेकिन इस वाले फाइल में ये नहीं है, so ये delete हो गया है line. Anything that gets deleted is highlighted in red with a minus sign, and anything that is added, मतलब जो आगे के दो lines से जो add हो गए, it is highlighted in green. Okay, so it's called a diff file. ये आप में से कोई भी Linux machine वगैरह use नहीं करता है, लेकिन future में if you want to learn some basic Linux commands or something, diff comes to be very handy because it's very easy to compare files in the terminal itself with diff command. So ये GitHub में आप directly देख सकते हो. Okay, so that is how you can track your changes. So अगर आप मतलब when you want to go back to previous version, this is the tree जहाँ पे आप आपके हर एक कमिट का क्या चेंज हुआ था, हर एक कमिट पे वो आप जाके देख सकते हो, and you can take some codes and pieces from there. Okay, then we have branches. We did not make any of the branches last time. Okay, so branches में क्या होता है कि ये मेरा एक so we did all that exercise na, parallel branch and graph वाला हमने एक देखा था. Okay, we saw this कि आप नोड से किस नोड तक जा सकते हो अगर कोई कनेक्टेड नोड होगा तो, एंड देर आर सम पैरेलल पाथ्स इस ग्राफ में, लेकिन आप एक नोड से डायरेक्टली एच नोड से आप सी नोड पे नहीं आ सकते हो क्योंकि ये अलग ब्रांच पे है. दिस इज ऑन different branch and this is something different branch. So your graph is like a parallel universe of three branches, correct? This comes into play when you want to host your code but with some different features in each of the branches. Okay, so software development में क्या होता है कि let's take like very simple example. आप exploratory data analysis कर रहे हो. Okay, you are analyzing some data, you are analyzing one main file, suppose say iris data set आप analyze कर रहे हो. Okay, that code you have hosted on this main branch. Okay, now you want to say कि okay, I also want to analyze some other data set, say the cars data set or Titanic data set. Okay, ये R अगर आपने R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है, so ये डेटा सेट उसमें ऑलरेडी loaded है. Okay, this iris is a standard data set, this cars data set is a standard, Titanic is a standard data set. So अपने main branch पे suppose iris data set you loaded. I'll just write it over here somewhere. Let's edit the file. This is for iris data set. Okay, in this you are making exploratory data analysis.
for quantitative fields. ओके, सो आइरिस डेटा सेट में क्या है, उसमें एक आइरिस नाम का फ्लावर जो है उसके 3 अलग अलग स्पीसीज की मेजरमेंट्स है, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ. सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव, 4 क्वांटिटेटिव कॉलम्स है, न्यूमेरिक कॉलम्स है इसमें. ओके, सो दिस बिकम्स योर आइरिस डेटा सेट का वर्क ऑन दिस ब्रांच. देन यू से कि ओके, ये तो क्वांटिटेटिव फील्ड्स हो गए. आई वांट टू राइट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का कोड पर फॉर द क्वालिटेटिव और कैटेगरिकल स्टाइल के कॉलम्स. तो टाइटैनिक वाला जो डेटा सेट है ना, उसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, उसमें ज्यादा करके कैटेगरिकल वैल्यूज है कि अगर पैसेंजर का टिकट था तो कौन से क्लास का था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का था क्या, वाज द पैसेंजर अ मेल और फीमेल, ऐसे करके. सो वो बहुत ही अच्छा कैटेगरिकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा बेस डेटा सेट है. सो मुझे ये कुछ फीचर्स इसके यूज करने हैं इस कोड के, पर I want to build a different track of analysis for that. So what I'll do is I will add a new branch over here. So it is saying कि अगर आपकी already branch है तो you can search for this or you can create a new branch. Okay. Let us just give the name new branch. Create branch, new branch from main. Okay. New branch. वहां पे क्या लिखा था, क्रिएट ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच वाज न्यू ब्रांच, जो मैंने टाइप किया, फ्रॉम मेन. मतलब मेन ब्रांच पे आपका जो भी कोड है वो कोड बेस लेके वैसे के वैसे वो कोड बेस कॉपी करके मैंने ये नए ब्रांच पे लाया है. ओके, सो नए ब्रांच में मुझे सेम रेडमी फाइल दिख रहा है क्योंकि मैंने आई जस्ट कॉपीड इट बट ऑन अ डिफरेंट ट्रैक. मतलब ये यहाँ पे जो आप दिस वन वी वर सेइंग ना, सपोज आई वाज एट दिस let's say this middle one is my main branch. Okay, so मैंने यहाँ पे कुछ एक रेडमी फाइल बनाया था, मैंने वहाँ पे कुछ I made a change कि this is like iris data set के लिए ये डेटा एनालिसिस का रिपोजिटरी है. यहाँ से फिर मैंने एक नया ब्रांच किया. सो आई एम एट दिस पॉइंट नाउ. ओके, सो मेरे पास पिछले वाले ब्रांच में जो भी चेंजेस किए हैं ना वो है. ओके, आई कैन एक्सेस देम, यू सी आई कैन एक्सेस देम. अभी मैं इस ब्रांच पे कुछ नए चेंजेस करूंगी and then this will be like for just for the Titanic ka data set. So I'll go in this direction which will be different from whatever I'm going into the main branch ka. So if we go back, when if you see the commits, because I have copied from main, मुझे इसके commits already मेरे पास है main branch के, and the new commit that I just did is also there. Today जो मैंने today I just updated that analysis for iris dataset. You can just go and see it what it is. Yes, 3 lines are added, iris dataset, exploratory data analysis. So today's commit is also there, plus previous commits are also there. Let's go back. If I go on the GitHub repository, if I click on the repository name, it will by default show me the main branch. Okay, so I can go into this drop down and select new branch. Okay, here I will edit Titanic data set, exploratory data analysis for categorical fields. Okay, commit changes. Okay, so I made some changes on the new branch. Okay, whatever data files I had on the new branch, वही पे मैंने changes करे हैं. Let's go and check the commits. यहाँ पे 5 commits है. Okay, remember new branch पे 5 commits है. Okay, this was the commit that we did about that iris data set before making new branch. And this is the commit that we just now did. If we go and check the commits, iris data set exploratory data analysis lines थे वो delete हो गए और ये 2 नए lines add हो गए. In that lines also it is highlighting specifically, it's like this 2 new words were specifically added, बाकी वैसे के वैसे था. Okay, now let us go back.
Let us go back and check our main branch. Main branch में there is just 4 commits. Okay, there is just 4 commits on main branch because we did the new editing and saving on the another new branch, not on the main branch. So if I go into this commit tree, I'll still see only the 4 commits, the 3 from previous class and the one that we just did about iris dataset. Okay, whatever I wrote for the Titanic dataset is on a new branch. So it is separate. It is like this parallel universe. Okay, this is where our main branch is going, and this is where the Titanic wala branch is going. Okay, so you can keep these things separate. I'll tell you why branches are used in actual scenarios to suppose 2 different teams are working on some different kinds of sets of features to be added to the software or code. So they can work in parallel universe so that they do not interfere with each other's code. There is one thing. You can keep 2 different tracks of philosophy of building the software further. This is another thing. Very practical thing over here becomes in software companies, different branches are managed according to the objective of your software releases. So you have this production software release. Okay, this is like a very uh, tested, verified, robust code that stays on production branch. Okay, उसके पैरेलल में चलता है डेवलपमेंट ब्रांच सो डेवलपमेंट ब्रांच में all the software engineers on the team who act as collaborators on this GitHub repository will do all of their changes in the code, testing in the code. Once they have verified कि okay this code works, they will do all this on development branch. Only and only then they will move that code to the production branch, and then the production branch is that is deployed on the front. Okay, so that this is because then if you start making development में क्या होता है, there's a lot of trial and error also, no? You don't know कि कभी गलत हो जाएगा, कभी कुछ नए change के साथ पूरा का पूरा code corrupt हो जाएगा. So production branch is kept very clean. Only and only when you are sure and the code has passed multiple tests, तभी वो production branch पे switch हो जाता है, shift होता है. Otherwise all the work is done on development branch. Okay, so this is like the ideal scenario where branching is used. Got it? Okay, so then this was about branching. It is telling me something over here. It's highlighting compare and pull request. Okay, now I told you this real scenario, right? You're working on a separate branch. Like आप development कर रहे हो आपके code का एक separate branch पे, but at some point down the line you want it to be in your production code, right? So you want to make that code from development branch to your production branch. That is where compare and pull requests come in. Okay, let us click on this and see where it takes us. So open pull request. Okay, so pull request क्या करता है? It is comparing whatever code is on the new branch and it is pushing. You see this arrow, it is pushing it to the main branch. Okay, this action is called merging. These branches can be automatically merged. Now what does it mean automatically merged? Will come. Okay, so first PR. Okay, so pull request is also in short called PR. Okay, wherever you are working on something on a separate branch and you want to push it to the main code branch, you basically open a pull request. So create a pull request. Okay, checking. So let us see what it did after I created a pull request. Pull request मतलब मैंने एक अर्जी डाली उनको कि मेरे जो नया ब्रांच पे जो मैंने नया एडिटिंग किया है वो मेन ब्रांच पे भी कॉपी कर लीजिए. Add commits. Okay, fine. हाँ,
require approval from specific reviewers before merging. अभी यहाँ पे क्या है कि I am only the owner of this repository and I am only creating the pull request and I am only merging. So not required approval right now. But अब जब एक collaborative environment में जब काम करते हो तो there is someone who can approve this merging. Okay, so आपके डेवलपमेंट ब्रांच का कोड प्रोडक्शन ब्रांच में लाने के लिए somebody is sitting as an approver कि yes करेक्ट कोड प्रोडक्शन ब्रांच पे आ रहा है या नहीं देखने के लिए. Continuous CI CD is something you use in this development operations and deployments basically. Once you like make your changes, ये सब करने के बजाय ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेट होते जाता है. जहां पे भी आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग इंटीग्रेट, द चेंजेस आर ऑटोमेटिकली गेटिंग इंटीग्रेटेड एंड further down the line. We are not going to go there. Don't worry about that. Okay, so this is important. This branch has no conflicts with the base branch. So conflict मतलब क्या होता है कि आपके दो कोड फाइल्स में सेम लाइन पे दोनों फाइल में सेम लाइन पे अलग अलग चीजें हैं, देन दी ऑटोमेटिक मर्जिंग रिक्वेस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड कि ओके फाइल ए का चेंज रखना है या फाइल बी का चेंज रखना है. सो when there is a clash like this, conflict like this, automatically merging possible नहीं होता है. आपको मैन्युअली जाके सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा चेंज रखना है. ओके, and it becomes very messy at times. तो इसीलिए most of the developers preventive measures लेते हैं to avoid this kind of conflicts in merging. And that very basic preventive measure here is always and always get pull karna before you make any kind of changes in your code. Okay, because most of the people do not work on the GitHub platform directly that we are doing, because हम अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए सब कुछ गिटहब के GUI पे कर रहे हैं, बट मोस्ट पीपल वर्क ऑन देयर लोकल रिपोजिटरी वाया कमांड लाइन. सो whenever you go to that stage, always remember the golden rule to git pull before you do any changes. So let us merge the pull request. It's telling me, do you want to confirm the merge? Yes, confirm merge. Pull request successfully merged and closed. You are all set. The new branch can be safely deleted. Okay, so जो भी काम मैंने पैरेलल ब्रांच पे किया है वो सब मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो गया है. सो बेसिकली नाउ न्यू ब्रांच इज लाइक अ रिडंडेंट ब्रांच. ओके, वहां पे जो कुछ भी काम था वो सब मेन पे आ गया है. सो उसकी जरूरत नहीं है, मैं छाट दे सकती हूँ उसको भी बेसिकली. Okay, let us go and check how it is looking. Okay, now so this is मेन ब्रांच में हमारा पहले यहाँ पे क्या था, we had a iris data set, and now because we merged it from the new branch, the changes from the new branch have got carried over here. Let us check in the commits. Okay, so यहाँ तक देखते हैं हम. पहले merge pull request के पहले क्या था, let us see that. This is from a this is from the changes that we made in the new branch. So this is new branch का change था. अभी हमने वो मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दिया है, इसलिए हमें वो मेन ब्रांच के कमिट ट्री में दिख रहा है. ओके, एंड इफ यू गो दिस over here, it will just basically show कि okay, this was the merging pull request from new branch. So this is what got reflected into the main branch, and new branch का जो commit था वो भी reflect हुआ है, and this commit was the iris commit basically. ओके, आज का हमारा पहला कमिट आइरिस कमिट था. देन वी वेंट ऑन टू द न्यू ब्रांच जहाँ पे हमने आइरिस डिलीट करके टाइटैनिक के लाइंस लिखे, एंड देन we did the after this commit we did the pull request. So this got merged into the main branch. So iris delete हो गया main branch के file में से, and the titanic was the final thing that was there. Cool. So this is the branching and merging.
thing I wanted to show you. Any questions still here? This now I'm thinking this is a bit complicated. हमने बहुत यहाँ वहाँ से ऐसे वैसे घास खाया है सब कुछ. So any questions still now? क्यों करना है? ब्रांचिंग करना जरूरी है क्या? मैं बिना ब्रांच का कोड कर सकता हूँ क्या? Yes, you can. Any questions? Please ask me any questions. You when you're working alone, you don't. I mean, branching and stuff is not really basic Git thing. This is something I wanted you to get familiar with. Like you want to arrange your code in a different way. You want to keep your very nicely working code file on main branch, और कुछ अलग आइडिया आया रे ये ट्राई करके देखता हूँ तो आप वो मेन ब्रांच पे ही चेंजेस करोगे लेकिन वो सब मेस हो जाएगा. सो देयर इज एन अल्टरनेटिव कि आप एक ब्रांच बनाओ, नया ब्रांच बनाओ, वहां पे आपके चेंजेस कर सकते हो. And there is a way to merge that. Once you're happy with the changes, there is a way to merge it with the main branch as well. Okay, so this will prevent you to going back into the versions stuff. You will fix your version on the main branch and keep working in parallel on the new branch basically. So मैं currently I'm just telling you कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है गिटहब पे. जब आप एक्चुअली यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, जब आप एक्चुअली यहाँ पे काम करना शुरू करोगे, देन यू विल बी मोर इन पोजिशन ऑफ ओ ये भी करके देख सकते हैं. ओ मैं मुझे अभी ये प्रॉब्लम है कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय मेन कोड, लेकिन मुझे नया फीचर भी मेरे कोड में ट्राई करना है, तो मैं क्या करूँ? ओ मेरे पास एक टूल है, मैं नया ब्रांच बना सकता हूँ, नया ब्रांच बना के फिर मैं वहां पे काम कर सकती हूँ. सो दैट थिंग यू कैन डू. ओके, सो दिस इज लाइक आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ क्या क्या हो सकता है गिटहब के यूनिवर्स में. So any questions? How to sign up github.com? Can you explain me? Absolutely, I can explain you. So you can see this github.com will take you. So last time मेरा क्या problem था? I had forgotten my password, right, to GitHub. I think I have it back again. I think I have it back. So let me sign out. Okay, if you go on github.com, this is the page that you should be seeing. Okay, let me take Manish's question first and I'll get to Sneha. So if you go to github.com, this is the page you will see. There's a big button here, sign up for GitHub. Enter your email address and sign up. And that will create an account. You can then आपका जो यूजर नेम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंटली. आपका फोटो इफ यू वांट टू अपलोड यू कैन डू इट. ओके, सो बेसिकली दिस इज द साइनिंग पेज. डोंट वरी अबाउट प्राइसिंग, इट इज फ्री. Okay, so that's it. That's what I wanted to show, and I hopefully I'm not signed out from here. Am I? No, I'm not. Great. Okay, so Sneha's question, could you please go slow while you're showing where you clicked and what you did in it? um Okay, okay. Was this too fast, Sneha? Okay. Um, okay, so okay, which which part in particular you want me to repeat? You can write anything for username, Manish. I would say pick shortest one and keep it. Don't keep it a random name. Keep it something closer to your own name. But if your own name is very big, you can make it short somehow. That's my solution. Sneha, can you tell me which part did you really miss so I can go over it. I can repeat it. I hope the font size is okay on the screen because I've already zoomed in. Uh, okay, questions then. Everyone got how to create new branch? Has everyone got how to create new branch? If everyone has got how to create new branch, can somebody unmute and tell me how to create new branch? Or may I'll follow your steps and go. Whatever you say, I'll do on the screen. So who wants to go?
Sneha said she is confused about new branch. She has not got it. So who else in the audience has got how to make a new branch and they can guide me? Come on, someone. Uh, Nobody the, has per- got. the person who want to explain, they can write in the chat box, and I can Yes, yes. then I can unmute you. Okay, okay. Okay, okay. You are able to unmute. Okay, so sorry. Yes, so anybody can volunteer in chat box. We can And then I unmute you can then. unmute the person. Yes. Anyone wants to take a chance at it? Okay, someone said I would like to. Admin is saying I would like to. Okay. Hmm. ओके या बोलिए प्लीज आप और आपका नाम क्या है एडमिन तो डेफिनेटली आपका नाम नहीं होगा यस Yeah, there is my name. My name's Pankaj. पंकज ओके यस पंकज प्लीज Yes. Tell me, Pankaj, how to create new brand so I will follow your guidance. I will try. I will try. First, hit on the main key over there. Okay. Okay. And now the new branch I could see over there. Then Hmm. I click over there. ओके सो यहाँ पे न्यू ब्रांच पे हम चले गए क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाई थी. कैन वी ट्राई टू मेक अनदर लाइक और एक नया ब्रांच बना सकते हैं हम? Yes, we can. ओके सो वो बताएंगे कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे चली गई ड्रॉप डाउन पे बेसिकली. ओके सो ये जहाँ पे ब्रांच का आइकॉन है यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होता है. सो व्हेनेवर आई गो ऑन दिस ड्रॉप डाउन ये पॉपअप आ जाता है जहाँ पे अभी जो भी ब्रांचेस है उसकी लिस्ट मुझे दिखाई देती है. ओके अगर कोई नया ब्रांच बनाना है तो फिर क्या करेंगे हम? पंकज जी बताइए. हेलो. यस पंकज आई थिंक यू आर ऑन म्यूट. Okay, I think I lost him. So if you want to add another branch जो कि इस list में नहीं है, so you need to type a new name here. Okay. So नया branch अगर मुझे God wait a second, why is it not पंकज मैं आपको बोल रहा हूँ अनम्यूट के लिए सो प्लीज अनम्यूट करिए या प्लीज या प्लीज बोलिए पंकज. Okay. Okay, wait a second. It's not taking create new branch here right now. One second, huh? Just ये merge हो गई है, ये default है. Okay. So first time, okay, so GUI mein when you're making the first time, you get to type the branch name over here, basically. And since there won't be any branch present, it will create a new branch on that. But since we have already created a new branch from main, it's not giving me that automatic option right now. ओके सो अजय जी ने सॉरी पंकज जी ने करेक्टली कहा कि आप ये ड्रॉप डाउन पे जाके यू विल फाइंड अ लिस्ट एंड वो लिस्ट में आप न्यू ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अभी ये न्यू ब्रांच सिलेक्ट करके
जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड ब्रांच है वहां पे हम जा रहे हैं, बट GUI पे अभी सेकेंड ब्रांच में ऑटोमेटिकली आई एम अनेबल टू मेक. सो लेट अस ट्राई टू डिलीट दिस न्यू ब्रांच, क्योंकि हमने ये कर लिया है, पुश कर लिया है, करेक्ट. सो हाउ डू आई डिलीट दिस न्यू ब्रांच? I'm not. Okay. I'm trying to find a delete on GUI. Sorry for this. Okay, let me go on a different repository to show you the new branch. Okay, so sorry for a digression over here. So I've just got on a different repository जहाँ पे दो branches नहीं है, एक ही branch है, and I'm going. Come on. What is it? Oh, okay. Okay, मैंने sign out कर दिया ना, sorry. Damn it. I'm like वो क्यों नहीं आ रहा है? You can stop sharing and then you can reshare, I guess. Yeah, well, it's okay. Password won't be seen. Oh, God. This is why I was not. Yeah, I'll just stop sharing one second. Yeah, that will be better. Yeah. So I always forget my Git password. I don't know why. It's normal. Okay. I think being time we have two questions from Minto. You are mute, Disha. Yeah, so after merging, we'll have to delete the previously added branch to add a new branch. No. So I was wondering why it is not showing the create branch. I was like, is this like something on the GUI के limitations है क्या? But that's not the case. मैं sign out हो गई थी. मैंने वो login page दिखाया ना आपको कि कहाँ से account बनाया, तो उसके लिए मैंने sign out किया था and I did not remember कि मैंने वापस sign in नहीं किया है. So branch create करने के लिए आपको you need the ownership authority. तो मैं खुद इस रिपोजिटरी की ओनर हूँ, ये पता कब चलेगा अगर मैं मेरे अकाउंट में साइंड इन हो तो. सो नाउ आई विल क्रिएट वन मोर ब्रांच. सो हमें पंकज जी ने क्या दिखाया कि ड्रॉप डाउन पे जाइए, ड्रॉप डाउन पे जाके आपको ये स्विच ब्रांचेस टैग्स वाला पॉपअप आ जाएगा. ये पॉपअप में यू विल गेट अ सर्च बार. ओके, तो सर्च बार का दो यूज आप कर सकते हो. एक मतलब अगर आपको कोई ब्रांच नेम पता है ऑलरेडी तो उसका नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो वो ब्रांच.
अगर आपको नया ही ब्रांच बनाना है तो यहाँ पे आप नया ब्रांच का नाम डाल सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस कमांड which will be executed automatically. So create branch from main. So ये demo branch from main will be created. Okay, so ये main वाले branch में जो भी data है वो copy हो गया demo branch में. So Sneha, is this clear to you now? Is it clear how to create a branch, new branch? Yes, anybody has questions with branching? You will, so Minto आप जो कह रही है, you will have to delete, ऐसा नहीं है वो. कोड redundant हो जाता है, इसलिए it is good to clean duplications आपके GitHub में. So that's the option कि आप delete कर सकते हो, आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो. Branching में और किसी को स्नेहा, is it clear now? So this is how you do the branching. The timing is 6:15. Okay. Yes, clear hai. Rohit Kumar is able to log into the GitHub. Very good. Okay. So we have seen how to make a new repository, how to make edits in that repository, how to save it, how to make new branches, how to work on that new branches and stuff. Abhi, one more trick I'm going to show you what you can do in GitHub is, so Rohit Kumar has logged into GitHub. Okay, so आप में से कोई लोगों ने बनाया है अपना account. You can go on your home page. You can click on this left side GitHub icon. So this gives you, आपने जो भी accounts follow करके रखे हैं GitHub पे, उसका वो एक फीड देता है. आपका फेसबुक का जो होम पेज का फीड होता है ना, फेसबुक पे जैसे दिखता है वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे सारे अपडेट्स, मतलब कोडिंग के काम के अपडेट्स होते हैं लोगों के. ओके, सो दिस इज लाइक मेन गिटहब फीड. सो यू कैन गो इनटू you can go into people's repository. उन्होंने अगर वो repository public करी है तो of course, and look at their work. So looking at somebody else's coding work is a great way to learn yourself. कि इन्होंने ये XYZ problem कैसे solve किया, इन्होंने how did they write code, what is their clean coding style and stuff. This is a very good learning strategy, I would say. Okay. Now I am working with an intern in my organization. Okay. So that intern is maintaining all the work under one repository named Advanced Analytics using Python. Okay. You can see the difference. यहाँ पे Varun Rao is the name of the account holder, the GitHub account holder. This is not Disha Patil. So मैं अभी मेरे account में नहीं हूँ. I'm in somebody else's account और वो somebody else's के किसी एक repository को मैं देख रही हूँ. Sagar is asking, I can pull from anyone whole code. I may then make any app project from it. Is it not copy? Copyright चोरी नहीं हुआ है. So there is this one not, but you will find readme files of repositories of code जो open source किए होते हैं. वहाँ पे नीचे they will always have a copyright declaration. Okay, so they will have some open source license over there ki yes, you can use this code for this and this purpose. You can use this code for any purpose. You can use this code for academic purpose, such and such. So many open source repositories जो होते हैं, basically you can take that code and make your own and use it, or make changes to it and then use it. Okay, this code ओपन या फिर पब्लिक रिपोजिटरी में होस्ट किए होते हैं.
if people do not want to make it open and they do not want कि कोई भी आके मेरा कोड डाउनलोड कर ले फिर ऐप बना ले और फिर कुछ भी कर ले, they will not make the repository public, वो रिपोजिटरी प्राइवेट रखेंगे. अगर कोई रिपोजिटरी प्राइवेट होगी तो आपको वो दिखेगी भी नहीं. You will not be able to see the repository. Okay, and as for the open source code, most of the open source code, they basically are like you can use it for yourself and make changes on your end and use it for your purpose. If not, there are some copyright declaration in the readme file somewhere where they will say only for academic purposes such and such. What to use GitHub? What is sorry, Rohit Kumar, I do not get your question. Can you please arrange it differently? Can you please ask it again, maybe? Okay, so I'll get ahead till then. So right now I'm in somebody else's account and some other repository they are using. Okay, now branching हमारा हो गया. नया concept I want to introduce is forking. So this is the code that is maintained in advanced analytics using Python ka repository. I want to make edits to this code. I want to download the code that Varun has worked on. I want to test it. Okay, I want to see if some additions will make the code better or not before giving him any kind of feedback. Okay, so what I will do is I will go over here, right hand side top corner. Okay, everybody can see this right hand side top corner. It is saying fork. I'll click on it. Okay, a fork is a copy of a repository. Okay, so जो भी वरुण का एडवांस एनालिटिक्स का रिपोजिटरी है उसका एक कॉपी बनेगा. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. So वरुण ने जो भी काम किया है अभी अपने रिपोजिटरी में एडवांस एनालिटिक्स के, उसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी. I will make a copy on my account. ओके किसी और के रिपोजिटरी की कॉपी मेरे अकाउंट पे करना. ब्रांचिंग में हमने क्या किया, मेरा खुद का रिपोजिटरी था, मेरे खुद के रिपोजिटरी को उसी रिपोजिटरी में एक अलग कॉपी किया. ओके, सो इमेजिन अ फोल्डर स्ट्रक्चर इन विंडो. एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर था, मैंने उसी फोल्डर का कॉपी किया. दैट वाज ब्रांचिंग. ओके, फोर्किंग क्या है कि दो फोल्डर्स है मेरे पास. ओके, ए एंड बी. I am going inside B folder. Inside B folder जो सब फोल्डर है उसका मैंने कॉपी करके A फोल्डर के अंदर डालना है. ओके, दिस इज फोर्किंग. ओके, सो किसी और के रिपोजिटरी को मैं मेरे खुद के अकाउंट में कॉपी कर रही हूँ. सो viewing ओके, कॉपी द मेन ब्रांच ओनली. मुझे सिर्फ बंदे ने कुछ ब्रांचिंग किया नहीं है, सो आई जस्ट हैव ऑप्शन कि मैं मेन ब्रांच ही कॉपी करूं. इफ आई वांट समथिंग एल्स आई कैन कॉपी डिफरेंट ब्रांचेस. सो क्रिएट फोर्क. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, नाउ आई एम इन माय अकाउंट. अकाउंट नेम मेरा दिख रहा है दिशा पाटिल. मैंने रिपोजिटरी का नाम सेम लिखा है. ओवर हियर यू कैन सी अ न्यू लाइन. ये प्रीवियस वाले रिपोजिटरी में नहीं था. आई कैन शो यू दैट. हम जो गिटहब वर्कशॉप पे काम कर रहे थे, कोई भी सब टाइटल यहाँ पे नहीं है बिकॉज हमने खुद ने ये रिपोजिटरी गिटहब पे तैयार की है. ये ओनरशिप ये रिपोजिटरी का मेरे पास है. The ownership of this repository is with Varun. Okay, so even if this repository is showing in my account, it is telling me it is forked from Varun advanced analytics repository. Okay, it's clearly telling me कि original owner वहां से है. So this and then once it is inside your account, फिर आपने अभी तक
GitHub में जो भी सीखा है आप सब कुछ कर सकते हो. आप यहाँ पे ब्रांचिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट. दिस विल स्टे अंडर योर अकाउंट. सो आप जो भी चेंज करोगे वरुण के ओरिजिनल फाइल्स में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, अनलेस यू वांट इट टू. सो इफ यू वांट इट टू, तो आप यहाँ से भी वो जो हमने पुल रिक्वेस्ट का देखा था, सो हियर ऑल्सो यू कैन डू अ पुल रिक्वेस्ट विच देन वरुण हैज टू अप्रूव. हमने जब पुल रिक्वेस्ट खुद के ब्रांच के लिए किया था तो वहां पे ऊपर एक आया था कि अप्रूव्ड करके, बिकॉज वी हम खुद ही इसके ओनर है और हम खुद ही पुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम खुद ही मर्ज कर रहे थे. राइट नाउ इफ आई डू द सेम स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट, अगर मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करके वो फिर से वो नया पेज आएगा. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट राइट नाउ. तो वहां पे it will not directly get approved because it will just create a request and send a message to Varun where Varun will have to press that merge button. जो लास्ट में हमने यहाँ पे merge button प्रेस किया था pull request में. Do we still have a branch? Let's go through it. Okay. So just to have a recap of what we did in pull request, मैं फिर से कर रही हूँ. सो हमने और एक नया ब्रांच बनाया, डेमो ब्रांच. उसमें मैं आई जस्ट एडिट समथिंग, डेमो पुल रिक्वेस्ट. ओके, I just edited something and I committed it. So let us just go to our main branch. Okay, had a recent, so demo branch had recent pushes. Okay, तो उसने डायरेक्ट डिटेक्ट कर लिया कि डेमो ब्रांच में मैंने कुछ एडिट किया. कंपेयर एंड पुल पे मैं जाऊंगी. Okay, I'm not going to give any. So it's telling compare demo branch and pull it to main. Okay, copy it to main. So it's able to merge everything good. Create pull request. So this same page will come up if I press this button. What will be different is once I create pull request, ये मेरे इसमें, okay? This is for the demo branch. Once I create pull request, this branch has no conflicts and यहाँ पे जो merging का button है, ये मैं खुद प्रेस कर सकती हूँ क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ दिस गिटहब वर्कशॉप रिपोजिटरी. मैं खुद ओनर हूँ, सो मेरे खुद के पास राइट्स है कि मैं ये प्रेस करके आई विल फाइनलाइज इट, आई विल कंफर्म द मर्ज. But the same thing, if I go through this new pull request and it will check कि conflicts है या नहीं है and it will mark it green, लेकिन वो merging का जो right है वो मेरे पास नहीं होगा, वो वरुण के पास होगा. So when Varun receives the message कि किसी ने pull request send किया है, he will go and check and then he will take a decision कि वो merge का button press करना है या नहीं. Okay, because वो उसकी repository है. The main owner is Varun. Got it? Did you get the difference between this two pull request? Okay, any questions over here? So I'll wait and I'll take it again slowly if anybody has questions. Did you get the difference between these two different pull requests? एक था नया ब्रांच हमने खुद में करके पुल रिक्वेस्ट करना, एक था किसी और की रिपोजिटरी फोर्क किया, मतलब कॉपी किया और फिर पीआर किया. ओके, मिंटो इज सेइंग इट इज क्लियर. ठीक है. So this forking is also, why is it so good? Like right now it's good for me कि मैं वरुण का जो काम है वो मेरे एंड पे अच्छे से रिव्यू कर सकती हूँ without disturbing his own workflow. Another thing is which I showed you over here कि ये जो फीड है ओपन सोर्स कोड्स के जो भी है, you can go into any kind of repository and check if you can, play around that code. Okay, playing around somebody else's done code is also a great way to learn and you're not even disturbing their original workflow. आप उनके काम को कोई disturb नहीं कर रहे हो, लेकिन you are getting a chance to learn on your own. Okay, that's why this forking is also very useful. I will go to one
repository. Wait, it will be in my stars maybe. Let me check. हाँ, one more feature. So मैंने जो आपको bookmarking का बताया था कि आप कोई भी repository में जा सकते हो and you can bookmark. Let me show it how to bookmark. That was something I wanted to bookmark. Yes, I wanted to bookmark this. So this is something new that has come up. Shiny is a dashboard making framework for R, लेकिन अभी it is getting to used for Python as well. So I wanted to bookmark it. Bookmark matlab star kar dena. Okay, so I've starred it. So now if I go on my top right corner जहाँ पे मेरा account है, the photo profile picture जहाँ पे दिख रहा है, I can go into your stars directly. यहाँ से भी मैं shortcut से direct your repositories में जा सकती हूँ and I can go into your stars also. So यहाँ पे मेरा नया bookmark दिखना चाहिए. Okay, I'm able to see the new bookmark over here. Okay, so this is one really good thing. यही में से कहीं होगा. Yes. So this is transformer tutorials करके this Niels Rogue has made an excellent repository जो कि मेरे काम में बहुत यूजफुल होता है क्योंकि मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर जैसे मॉडल्स यूज करती हूँ. सो एनी न्यू मॉडल कम्स अप ही पुट्स अप अ ट्यूटोरियल ही so I can basically fork this repository onto my account. Okay, let us fork it. Okay, ये fork कर लिया. ये मेरे account के अंदर आ गया लेकिन ये नील्स के original author is Niels. Now over here, whatever work he has done, basically I can edit this. Okay, and I can make it unique to me. So for example, यहाँ पे सारे इन्होंने जो कोडिंग के एग्जाम्पल्स देके रखे हैं, ये कोडिंग के एग्जाम्पल्स नील्स ने बनाए हुए हैं. बट आई कैन मेक माई ओन एग्जाम्पल्स एंड पुट इट हियर. ओके, सपोज ये लेआउट एलएम करके एक ट्रांसफॉर्मर का मॉडल है. यहाँ पे इन्होंने कुछ आई पाइथन का कोड बनाया है, पाइथन का कोड बनाया है जुपिटर नोटबुक में. आई कैन तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे बेसिकली बनाया है. अभी नॉट नेसेसरीली कि मुझे सेम डेटा सेट पे काम करना है, मेरा डेटा सेट कोई अलग है. करेक्ट. सो मैंने क्योंकि अभी ये फोर्क करके मेरे अकाउंट में कॉपी कर लिया है, सो मैं मेरे खुद के डेटा सेट पे चेंज इस कोड में ये बेस कोड लेके मेरे खुद के डेटा सेट पे आई कैन मेक अ चेंज. सो दिस इज वेरी क्विक वे टू मेक प्रोटोटाइपिंग, लर्न new technologies, new releases, new models, data science world mein. This is a very simplest way to do. Now, I want you to introduce all this because you can use GitHub as a learning resource if you know this. ओके, वंस यू हैव गिटहब अकाउंट, आप बेसिकली लोगों का कोड देख के और उसके कोड के साथ यू कैन प्ले अराउंड दैट कोड, मेक इट योर ओन. आपके खुद के एडिशंस करिए, आपके खुद के कस्टमाइजेशंस करिए उस कोड में, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. You already have some base. You want to make a little bit of customization. It becomes fun and easy also to learn. Okay. So Pragna is asking, can we delete, cancel, or disconnect the already pulled request? I think yes, you can. I think yes, you can. Let me check that. I'm not very sure how to. Or it can be rejected from the other side also. Let us go and check. I have not created now. We've merged this one.
No pull request. Okay, let's go and create a pull request maybe. Let me make, so I am trying to answer someone's question over here who has asked, can we cancel or delete a pull request? So uske liye I'm just making a test scenario. तो मैंने डेमो ब्रांच में और एक लाइन ऐड कर दी. Okay, commit changes so that the branch file is different from the main branch file. Okay, so I go to main branch. God, pull request, new pull request. I want to pull from the demo branch. मैंने वहां पे कुछ change किया है. So yes, create pull request. Comparing changes. Demo branch is going to main branch. Create pull request. Create pull request. And there should be. Okay, अभी ये merge pull request नहीं करते हैं. Okay, let's try to check if we are able to delete a pull request somehow. Yeah. So you have a, if you do not want to merge this or you just want to drop this flow, you have this close pull request widget over here. Okay. So I'm going to go through all this a little slowly again. So you understood how we came to pull request. अभी pull request हमने एक दो बार देख लिया है. Once I click on the create pull request, so it just compares those two file, main branch में and demo branch में. It will say कि file में कोई भी conflict नहीं है. So अभी तक हमने standard response क्या दिया कि okay कोई conflict नहीं है, मुझे pull करना ही था तो merge कर दीजिए. Okay, merge these two files. But अभी मैंने बीच में माइंड चेंज कर दिया. आई डोंट वांट टू गो अहेड विथ व्हाट आई स्टार्टेड. मुझे नहीं ये दोनों मर्ज करना है, मुझे कुछ और काम करना है उस ब्रांच पे. ऑन दैट नोट आई कैन हैव दिस ऑप्शन टू क्लोज द पुल रिक्वेस्ट. ओके, so I close the pull request. Done. So this is a closed pull request. It's not open or it's not merged also. Oops. Are you able to see the screen? Yeah. Okay. Okay. There's something going on. I think I lost my video somehow. I don't know. I can see you clearly. Yes. So where were we? Yeah. So forking would be a good way for you to start working on somebody else's code, customize it, make it your own. Okay. यहाँ तक कोई questions now? Are you finding this interesting? Are you finding GitHub interesting? Okay, Disha, I have one question. Yes. When it says there is no conflict, so what is the हाँ. meaning of that? Yes. So when it says there's no conflict, अभी मुझे ना conflict create करना पड़ेगा. Conflict create करना थोड़ा सा difficult है. Okay, I'll try to tell from some example that I can show. Like I'll manually make an example. Let me stop the screen. Disha, now we lost your video, I guess.
No, I can't hear you. Disha, I can't hear you. Others can hear her. I can't hear her. People can say in the chat? Yeah, thank you. No. Your voice is not clear, Disha. Hello. Yes, now you're on. Okay. There is some issue with the mic. Okay, I'm audible now, right? I hope so. Okay, so conflict. So Ajay ji was asking like, what do you mean by? अभी तक हमने जो भी pull request करी है, there is no conflict. So suppose I have this is a file, okay, that I am editing. Somebody else is working on the different branch और उनके पास भी एक file है and they have some text on exactly the first line. मेरी भी इस file में first line पे एक line है. This is the first file. उनके यहाँ पे first line पे there is a text. This is a second file. Okay. The position of this line and this line in both the file is same. Exactly same position पे है. Okay. So when you're merging this two together, I mean, so you have to take a call कि ये वाला रखना है या ये वाला रखना है. I think this did not come up right now because we were trying to replace main branch का code completely with the second branch. We were completely replacing it. So जो भी वो same line पे भी अगर था तो वो paste हो जा रहा था. But in collaborative scenarios when you're working, आपके पास कुछ commits है, फाइल में कुछ commit किया है आपने git पे, लेकिन वो push नहीं किया है और आपने कुछ नया वर्जन आपने पुल कर लिया GitHub से और उसका भी पोजीशनिंग सेम है, then it creates a conflict which one is the right one, which text is should be there in the merged file. That's where the conflict comes. मैं थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास अभी example नहीं है ना, I'm unable to explain it right now over here. But इतना समझ लीजिए कि the automatic merging does not go smoothly. Okay, so the file 1 and file 2 is having different text in same places, and then it is trying to ask for you कि आप manually decide करिए कि कौन सा रखना है, क्योंकि I am failing to decide it. Okay. That's when the conflict comes, and then it's also very वो manually देखना भी थोड़ा सा it becomes a bit hectic and messy in a big code. But let us try to simulate the conflict thing. There's one. Oh, it's already 4:40. I wanted to show this interactive page to students where they can actually simulate this kind of scenarios. So thanks for bringing me to time. Let's try to find कि वहाँ पे कोई conflict का scenario है क्या. Okay. Where is it? What's this idea? The screen is still visible, right? Yes. Yeah. So everyone, I'll be pasting this address in the chat as well. Learning Git branching with JavaScript. So they have made a nice interactive tool over here. How do I reset it? Okay. So
it is like a game. Okay, it's like a game that you can play and you can go to really advanced topics. But at least for like merging and stuff, like let's start with introduction to git commit, which was the first command that we learned. I'll increase the font size. Okay. Uh, git commit records a snapshot of the files in your directory, right? So हमने देखा था कि सिर्फ सेव करके कुछ नहीं होता है. Git commit अगर आप करोगे तो वो वर्जन रिकॉर्ड होगा. एंड somebody said कि वो वर्जन को फिर एक एक्चुअल यूनिक आइडेंटिफायर भी मिल जाता है. It's like a giant copy paste, but not simply copy paste. It gets a different ID to itself, is what we saw. So this is like you can actually go through all of this text also. It will help you to revise each of these commands and understand them in much details. Okay, but like let's go to the example directly. So अभी practice में वो कैसे दिखता है? So दिस इज लाइक इनिशियल कमिट. हमने वो कमिट के ट्री पे जाके देखा था कि हमारा जो इनिशियल कमिट था इट वाज लाइक व्हेन वी क्रिएटेड न्यू रिपोजिटरी. हमने पहली बार वो न्यू रिपोजिटरी क्लिक करके रिपोजिटरी का नाम देके जो कुछ भी किया वो इनिशियल कमिट हो जाता है. देन हमने कुछ फाइल्स में अगर चेंजेस किए, फिर गिट ऐड किया, फिर गिट कमिट किया, फिर गिट पुश किया रिपोजिटरी पे, राइट? तो फिर वो फाइनल second commit दर्ज हुआ with a new identifier, right? And now we can actually like make another commit. उसके बाद भी अगर मैंने कुछ changes किया तो I can make even another commit. What this arrow is telling कि आपका branch का नाम है main, currently आप main branch पे हो और currently आप C2 commit पे हो. आपने एक repository जब किया तब initial commit किया, फिर कुछ changes किया, फिर एक कमिट किया, फिर और कुछ चेंजेस किया, फिर एक कमिट किया. We can actually now play this over here, which looks like a terminal that I was using last time. Okay, so आपको डायरेक्ट टर्मिनल वगैरह सीखने की भी जरूरत नहीं है. Just try to use the commands. Okay, what is your objective? To get familiar with the commands, then you can use this playground kind of a area. So now every level, ये इसमें ये इंटरएक्टिव सेशन में it tells you every level has a goal. अभी इसमें गोल क्या है कि आपको इस तरह का ग्राफ बनाना है. Remember I told you Git is all about graph. If you try to visualize it, यहाँ पे अपने रिपोजिटरी स्टार्ट किया, फिर कुछ चेंज किया, फिर कुछ चेंज किया, फिर और कुछ चेंज किया, right? So every single level here is going to give you one goal that you have to reach कि आपको ये ग्राफ recreate करना है. So let us try to do one level together. Okay, I'll just keep this as a so it's also giving you hints initially. This is like level 1. Just type in git commit twice to finish it. क्योंकि आपके पास already एक पार्शियल ग्राफ उन्होंने दिया है और आपको उनके गोल ग्राफ को जाने के लिए आपको 2 कमिट्स और चाहिए. ओके, सो इट्स टेलिंग यू जस्ट टाइप git commit. दिस इज गोइंग टू सिमुलेट एज इफ आपने फाइल में कुछ चेंजेस किए, उसको ऐड किया और कमिट किया. वन मोर टाइम आपने और कुछ चेंज किया, ऐड किया और फिर कमिट किया. Okay, so it's just trying to make you familiarize with the entire process. Let's do one more thing and then I will not spoil the game for you. So you can do the levels on your own. Yes, so git branches भी हमने देखा है, like how does it create a branch. So initial commit था, फिर कुछ change किया, name आपके branch का main है, star is telling you like it's on main branch and commit C1. I give a new branch, git branch new branch. So अगर आप टर्मिनल में यूज करेंगे git तो आपको ये कमांड्स टाइप करनी पड़ेगी. अगर आप GitHub पे हो तो we have seen how to create the new branch. So this is that's all. So main
से कोड कॉपी करके एक न्यू ब्रांच उन्होंने बना दिया है. ओके, नाउ इफ आई डू गिट कमिट, आई एम स्टिल कमिटिंग ऑन द मेन ब्रांच क्योंकि मैंने स्विच नहीं किया ब्रांच. आपने नया ब्रांच बनाना और नए ब्रांच पे काम करना, ये दो अलग स्टेजेस है. ओके, ओवर हियर ऑल्सो इफ आई गो टू yet another branch and I'll create this yet another branch. ये बाय डिफॉल्ट GUI में GitHub प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट ये नए ब्रांच पे जा रहा है. ओके, बट if I create that new branch but stay in main branch only and make changes in main branch only, these changes will stay in main branch unless and until I go to the new branch and then make changes. So when you're using that command line वाला platform, मतलब terminal से आप ये commands वगैरह जब use करोगे, so creating a new branch becomes one different command, and then going on to that branch has another command which is git checkout. Okay, check out करना मतलब switch करना. You are checking out on the new branch which is the name given here. Okay, और फिर वहां पे अगर आपने commit किया, then okay sorry या फिर वहां पे अगर आपने commit किया तो ये new branch पे नया commit जाता है. Okay, this is how you can do. Okay, let's try to do what we just simulated. So it's telling me कि एक नया branch बनाना है bug fix करके. Okay, so make a new branch with git branch and check it out with git checkout. So I'll git branch. This will just create a branch for me. Bug fix नाम का branch बन गया. Okay, but the star or asterisk whatever you want to call is still on main. मतलब current branch सिर्फ main है. So मुझे change, I have to switch to the new branch. So I will switch with git checkout bug fix. And now I am on the new branch. Okay, वो asterisk हिल गया. So these are like small level, small things that will teach you how to go about each and every command in Git. Okay. Do not jump into this if you feel uncomfortable with the command style execution right now, because we've gone through a very simpler explanation on the GitHub itself. So to get familiar with GitHub, I would suggest first make the account, explore what GitHub is offering to you, explore some standard libraries that are hosted and are open source, explore what kind of basic codes somebody has made open source, can you make use of them, share your repositories within your friends. So Pradnya will make a repository, Minto will make a repository, they will share with each other, they will look at each other's code. Okay, they'll give feedback if that's possible. Try to do this kind of stuff from GitHub itself for now. Then once you're like comfortable कि okay मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि use कैसे करना है, then go to this Git learn Git branching when you're ready to go on to terminal. So आपको अगर terminal से ही local repository में सब कुछ काम करना है and you want to use terminal to git add, git commit, git save वगैरह ये सब करने के लिए, then before that you can refresh your learning about Git from this website is what I'm saying. Okay, otherwise you will be like okay ये सब commands type करना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे जा रहा है, but it would be a good stepping stone when you go into before you go to using the terminal. For now, first step I would suggest just use GitHub platform, the GUI platform itself. Get a hang of it. आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आप GitHub का आपके learning के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हो. So once you're done with
comfortable with that level, and when you want to jump into अब मैं GitHub का actually मेरे code management के लिए कैसे use करूँ, then you will feel the need of going to use the terminal level का command prompts, and that time you take help of this website is what I'll say. Okay, but and even if that any adventurous person, nobody is stopping you from taking a plunge and having fun with this game. It's quite useful to understand. Yes, and then we have last few minutes where I really want to hear your questions. Yes, all participants, you can unmute yourself and you can ask the questions if you have. Yes. So if the mic is not unmuted, you can maybe ping in the chat, or if you want to, And I if think you you don't should want be to. able to unmute now. I just Okay, gave okay, teaching. You should be able to okay, unmute. okay. Please then unmute and ask your questions if anybody wants to. No one, सबको समझ में आ गया GitHub? चलो फिर मैं आपको एक टास्क देती हूँ. अभी कुछ लोगों ने तो अकाउंट बना लिया है GitHub पे, करेक्ट? और बाकी के लोग अभी बनाएंगे इस क्लास के बाद. Am I right? So आप सबके जब अकाउंट बन जाएंगे GitHub पे, I want everyone to go and find this GitHub workshop repository. I'm going to paste the link over here. Okay. अब आपका खुद का रिपोजिटरी बना के हमने जो कुछ भी चेंजेस किया, कमिट यूज किया, ब्रांच मेकिंग न्यू ब्रांच यूज किया, वो आप करेंगे. बट आई वांट you to save this address which is pointing to this GitHub workshop repository on my account, and I want every one of you to fork it on your account. ओके और आप यहाँ पे फोर्क करोगे तो मुझे पता भी चलेगा, यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, देन आई गेट टू नो यस किसी ने फोर्क किया है, यस somebody has forked. So अभी कितने पार्टिसिपेंट हैं? 16. So I like to see, like minus me and Ajay ji, I would like to see 14 fork on this repository. Okay, so I think it's a doable assignment. Do you think it's a doable assignment, all of you? Will I see some fork requests or not? Yes. Okay. Minto is saying she is going to do. Sorry. Minto is saying they're going to do. Sagar is going to do it. Rajendra is going to do it. Yes. Pankaj has done it. Sneha is also saying yes. Great. So then over next 2-3 days, take your time. I'm not pushing you, but those who already have account, maybe they can right away do it. Others, make your account and then fork this repository and then see how comfortable you are with GitHub. Okay, so that would be your assignment. Wonderful. And then if you have, okay, one last thing then. Once you have got to my repository, if you have any issues, because we are taking GitHub workshop over here, I mean, you can reach out to me on email also, but since we are learning GitHub, issues is one of the tabs you can see under any repository. Okay, you can create a new issue over here. Okay, so you can create a new issue. Matlab you can, if you have any questions, doubts that you want me to answer, you can basically create a new issue. So this is a new issue tab over here. If you go, so this has to be created going on this GitHub workshop repository under issues, then click on create new issues.
Okay, and then you can ask me any questions. Okay. You can basically give a title to what doubt or what issue you are facing. You can ask, you can give it a headline. So anybody else coming onto this page will also look, okay, has this issue already been raised? If yes, then let me check the answers. You can type a brief description of your issues कि आपको actually क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आप अटके हो. So उसका एक description आप दे सकते हो. अगर आपको कुछ यहाँ पे attachment करने की जगह है क्या, जैसे markdown, I'm not really sure. GIF वगैरह actually डाल सकते हैं इसमें, but I'm not sure. So you can link basically to any code, or you can even paste code. लेकिन फिर भी I'll keep it simple for you. You can describe your issues in however brief manner, however elongated manner you want to. Submit new issue करना है, ठीक है? So once this issue is submitted, there will be a, अगर मैं issues के पेज पे वापस जाऊंगी, so I'll see this one issue coming here कि how to create a new branch, किसी ने question पूछा है. So I will go into this question. I'll look at your description. अभी मैंने description कुछ लिखा नहीं है, and I will reply back to you on that page itself. So you can also track it nicely, and this is a very good way for you to learn about how to raise issues and get replies to issues. ठीक है? Okay, so that's how you can reach out to me even after this workshop whenever you have any doubts about Git or GitHub. All right. Hey guys, if you have some questions, we can ask quickly, Yes. or you want to clarify something. But I think after 2 sessions, many things became very clear, I think, for most of us. So, Okay. but still, as we lack laptops and we are in the process to get the laptops. Yes. So when they are able to process it, then I think they will get more clarity. Yes, But, yes. जब तक आप हैंड्स ऑन काम नहीं करते ना, एक्चुअली आप वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करते, एक्चुअली गिटहब पे जाके वो सब खुद से नहीं करते, तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है. अभी आपको थोड़ा सा question from Minto. Minto, you want to ask something? Yes. Your voice is breaking, Minto. Minto has typed in nothing actually. So yeah. Okay, then we got. Okay. Okay. So yeah. So जब तक आप खुद से नहीं ये करते हैं, यूज करते हैं, तब तक आपको वो अंदाजा नहीं आएगा कि क्या क्या हो सकता है. If we could run the changes in branch before merge. Yeah, so you can make all your changes in branch. You can keep committing in your branch. Okay, so like I showed you over here now. So suppose this is the commit on the main branch जहाँ से आपने नया branch अपना बनाया. Okay, the new branch then went to the F commit. Okay, now F commit पे branch किया, तो आप इसी branch पे आगे कितने भी changes continue कर सकते हो. You can keep continuing changing. And then once you are like, okay, यहाँ तक के changes अभी अच्छे लग रहे हैं, so let me merge it with the main branch. तो आप merge कर सकते हो. Merge करने के बाद भी अगर आपने branch delete नहीं किया, तो you can continue keep making changes on that branch. Okay, so that is possible. Okay. All right, then I will wait for your doubts, issues in the GitHub workshop repository. I hope everybody has saved the links that I have shared in the chat box. And yes, I'll share some. Okay, I'll share right away. There is a book. Since the students have gone through our workshop already, so I want to give this book which gives a tutorial for GitHub,
and it also makes use of Art Studio. So, okay, where is it? Yes. This is like a very good resource for getting started with Git. Okay. Yes, somebody has forked the GitHub repository already, and my screen is still sharing. So you can see the count of fork has gone to 1. Okay, initially it was 0. You can see my cursor, top right corner. Now it is 1. So Sagar has already forked this repository, and I'm expecting this count to go up and up. Okay, nice. Okay then. So if there are no questions, we can end today's session. Yes, of course. Yeah. If no questions, then yes, yes. So thank you so much, Disha, and it was really fantastic, listening to you. And Thank you, thank you. yeah. But I really wish that our students could have asked some more questions. But I think Mhm. gradually, because this field Hmm. is still very new, uh, Yes, yes, so I think gradually when they get hang of it, so then they will have some more questions to ask it, right? absolutely, So absolutely. And the platform is open. You can post your issues anytime under this repository. I will not delete this repository. I'll keep it as it is, so that you have a place where you can raise your issues. mhm. Yes, Yes, sir, Git Sagar, is yes, complicated. yes. It is complicated. It is. It is complicated. Even if you get used to it, one conflict in merge request just puts you apart. And that's something I'm very afraid to simulate also, because it just comes up at times you are not expecting it to, and I'm like, oh no, 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 there shouldn't be any conflict. I don't want to resolve it. So And yeah, Sagar, even the some of the most advanced developers, even they are confused how actually Git works. They just yeah, know how to get the work done, and that's it. yeah. Say, yeah. So. It is. And so this is, so I was trying to give you all some tools basically that you can use on this GitHub. Like this, these are some tools, okay, कि branch कर सकते हैं यार, तो fork कर सकते हैं यार, clone कर सकते हैं किसी और की repository, देख सकते हैं किसी और का code. Mhm. So ये अच्छे tools है आपके हाथ में, which will help you in your learning process. सागर आपका क्या क्वेश्चन है ऑफलाइन वर्जन हाउ टू राइट कोड देयर मींस व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली अच्छा, तो गिटहब ऑनलाइन रिपोजिटरी है. अगर लोकल पे आपने गिट क्लोन कर लिया, गिट क्लोन करके आपने रिमोट रिपोजिटरी लोकल पे कॉपी कर लिया, देन यू हैव टू यूज ऑल दैट टर्मिनल वाला कमांड्स. ओके, सो अभी जो ये यहाँ पे देखा हमने, माय स्क्रीन इज स्टिल ऑन, यस. ये जो लर्निंग गिट ब्रांचिंग जेएस जो है, this makes use of this git commands. So git branch, git checkout, ये सारे आपको यहाँ पे टर्मिनल में टाइप करने होते हैं कमांड्स. ओके, which will make use of git locally. So github तो ये हमने अभी सीखा, वो ऑनलाइन रिपोजिटरी है, फाइन. जब आप थोड़ा सा और फैमिलियर हो जाएंगे, आप थोड़ा सा टर्मिनल के साथ भी थोड़ी सी फैमिलियरिटी जब आ जाएंगी, then you would be comfortable using these commands on terminal itself. Okay. यस, बट वो ये इंटरनेट वाले ऑनलाइन में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? यस, सो इनिशियली हमने वी सॉ दिस इंफोग्राफिक, राइट? सो आपने, दिस इज यू एडिटिंग फाइल. ये गिट एड आप टर्मिनल में कर रहे हो, मतलब ऑफलाइन आपके मशीन पे कर रहे हो. गिट एड करके वो स्टेजिंग एरिया में जा रहा है, राइट? मतलब कि गिट को पता चल गया कि कोई फाइल में चेंजेस हुए हैं. फिर गिट ने कमिट किया, मतलब उसको, उसने वो आइडेंटिफायर दे दिया कि ओके दिस इज वर्जन 4001.
Okay. Now this is still in your machine. Then you need to put that command git push. फिर वो जाएगा आपके GitHub पे मतलब remote repository पे. So git push is the command you can use on terminal to reflect it on the online version. Yes. Okay. So all right. So that's the flow. All right. Okay. So should we end it for the day? Yes, yes, definitely. And it Okay. was fantastic. And definitely we will have, these sessions again also, so that some new Yes. students and we'll revise further. So, Sure. and so that will be very helpful for all of us. Absolutely. So yeah, thank you once again, Disha. And My it pleasure. was really nice. Right. So Thank you for Nalanda for having me, and thank you for all the students for being so interactive. Uh, really, thank you. but we need to increase the interaction, yes, because some students were interacting, of course, I agree. Yes. but Yes. but yeah, we understand, because most of us, data science still challenging and still very new, and we Okay. need to hang off the vocabulary and everything, the new Yes. language, and it takes some Yes. time, so I agree with that. Yes. Let's Yes. see. But so No far so problem. good. I'm very happy that we are in the right direction with the GitHub side, because GitHub is very, very important to understand several It things is. about data science. It So is. It is. okay, okay, then Okay. all of you have a very good day and happy Sunday. Yes. Okay. Happy Sunday to everyone. Bye.